प्रीवियस वीडियो रे हमें डिफरेंशिएशन रो फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करथिले तो किछटा प्रॉब्लम सॉल्व करिया और किछटा फार्मूला हमें प्रूव करिया तो प्रूव dy dx of sin x is equal to cos x तमको y is equal to sin x दिया है तो फार्मूला को हमें ए फार्मूला गुडी को सब फर्स्ट प्रिंसिपल रो डिराइव हेचे तो फार्मूला गुडी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल रे प्रूव कर परिया तो y is equal to sin x तो y plus delta y is equal to sin x plus delta x delta y is equal to sin x plus delta x minus sin x तो y is equal to sin x तो delta y is equal to sin x plus delta x minus y is sin x तो sin x plus delta x minus sin x तो हमारा sin a minus sin b रो फॉर्मूला होचे 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2 तो फॉर्मूला यूज कर ले हमें 2 cos a होचे एठारे x plus delta x तो x plus delta x plus b होचे x minus sin into sin a minus b by 2 तो होचे x plus delta x minus x whole divided by 2 divided by 2 delta y is equal to 2 cos x plus delta x plus x तो 2x plus delta x divided by 2 into sin x plus delta x minus x तो x cancel हो गला delta x by 2 तब हमें LHL और LHS एवं RHS साइड रे लिमिट एवं डेल्टा x डिवाइड कर दवा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x is equal to limit delta x tends to 0 to cos 2x plus delta x by 2 into limit sin delta x by 2 तो हमारे लिमिट रो फॉर्मूला होचे लिमिट delta x tends to 0 sin x by x is equal to 1 एठी हमारा sin delta x by 2 अच्छे होल डिवाइडेड by delta x कारण बोथ साइड रे हमें delta x डिवाइड करछे LHS और RHS रे the limit delta x tends to 0 or simply we can write dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 to को लिमिट बाहर को नहीं आएगा cos 2x plus delta x divided by 2 तो cos पे हमारे लिमिट रो किसी फॉर्मूला नहीं तो sin रे हमको नवा लिमिट delta
x divided by 2 जेहेतु हमर फॉर्मूला रे sin x by x अछि तो x जगह रे हमर एठारे delta x by 2 अछि तो तळे भी हमर डिनोमिनेटर रे भी delta x by 2 दरकार एवं लिमिट रे भी x tends to 0 अछि तो delta x by 2 tends to 0 sin delta x by 2 divided by delta x divided by 2 into 2 तथरे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर रे 2 मल्टीप्लाई करछे तो ब्रैकेट रे हम लिखता the delta x tends to 0 that implies delta x by 2 also tends to 0 तो कहना में dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 तो एठारे लिमिट उठे देले हम कोन पाबा डेल्टा x रे 0 पुट करिया तो 2x plus 0 by 2 तो 2 2 कैंसिल हो गला cos x तो 2 cos x तो लिमिट एटे 1 by 2 हमें लिमिट बाहर को नहीं आसीबा तो इनटू 1 by 2 लिमिट डेल्टा x by 2 tends to 0 sin delta x by 2 divided by delta x by 2 तो हमारा फॉर्मूला limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1 so this much is our 1 so that implies dy by dx is equal to 2 cos x into 1 by 2 तो 2 2 cancel हो गला तो dy by dx is equal to cos x proved अब देखा dy dx of cos x is equal to minus sin x प्रूव करिया तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कौन कोचे फर्स्ट प्रिंसिपल होचे dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x तो y एठारे हमर कोन जाय y is equal to cos x तो y plus delta y is equal to cos x plus delta x cos x plus delta x तो delta y is equal to cos x plus delta x minus cos x minus y is equal to cos x तो delta y is equal to cos x plus delta x minus cos x तो cos a minus cos b रो फॉर्मूला होचे delta y is equal to 2 cos a minus cos b रो फॉर्मूला होचे minus 2 sin a plus b by 2 sorry sin cos a minus cos b is equal to 2 minus 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2 तो ये हमारा cos a minus cos b रो फॉर्मूला तो फॉर्मूला पे यूज करिया हमारा a जगह अच्छे x plus delta x b जगह अच्छे x तो 2 sin minus 2 sin x plus delta x plus x divided by 2 into sin x plus delta x minus x by 2 तो x
कैंसल हो तो डेल्टा y इज इक्वल टू -2 sin x प्लस x is 2x, the sin of 2x plus delta x divided by 2 into sin delta x by 2. तब आम बोथ साइड रे डेल्टा x डिवाइड करिया और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 यूज करिया तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x is equal to limit delta x tends to 0 -2 sin 2x plus delta x by 2 into sin delta x by 2 whole divided by delta x. तो हमारा लिमिट रो फॉर्मूला कौन थिला लिमिट x tends to 0 sin x by x is equal to 1. तो लिमिट -2 कांस्टेंट अच्छे तो आपको बाहर को नहीं आया -2 लिमिट डेल्टा x tends to 0 sin 2x plus delta x by 2 into limit delta x tends to 0 sin delta x by 2 all divided by delta x. तो हमारा लिमिट रो फॉर्मूला होचे लिमिट x tends to 0 sin x by x is equal to 1. तो sin x आगे कौन अच्छे डेल्टा x by 2 एवं लिमिट x tends to 0 तो हमारा डेल्टा x tends to 0 अच्छे किंतु हमारा x होचे डेल्टा x by 2 एवं डिनोमिनेटर रे भी डेल्टा x by 2 रहबा दरकार तो -2 लिमिट डेल्टा x tends to 0 sin 2x plus delta x by 2 into limit delta x tends to 0 sin delta x by 2 all divided by delta x by 2 into 2 that is numerator और denominator दिटा जारे 2 मल्टीप्लाई कर देले तो नेक्स्ट स्टेप रे हम 1/2 को लिमिट बाहर को नहीं आसबा तो -2 लिमिट delta x tends to 0 sin 2x plus delta x by 2 into limit into 1/2 limit delta x tends to 0 sin delta x by 2 divided by delta x by 2. तब हमारा ये पोर्शन फॉर्मूला फॉर्म को पड़े असला तो this much is equal to 1 এবং -2 लिमिट डेल्टा x tends to 0 तो 18 लिमिट उठा देले हमें डेल्टा x बदल कर 0 पुट करिया तो 2x plus 0 by 2 is 2x by 2 is equal to x तो -2 sin x into 1/2 this is 1 तो 1/2 into 1 is 1/2 तो 2 cancel होगा तो रहला minus sin x is equal to RHS or proved. So dy dx of cos x is equal to minus sin x.